Namaskar and good evening to all of you. Let us start the program and with an invocation song by Kumari Anaga. जय जय देवी जय जगत जननी जय जय देवी जय जगत जननी जय जय सरस्वती माई जय जय देवी जय जगत जननी जय जय भवानी जय शर्वाणी जय जय भवानी जय शर्वाणी जय त्रिभुवन सुखदाई जय जय भवानी जय शर्वाणी जय त्रिभुवन सुखदाई तेरी माया अनंत अपरंपार जाको कोई नहीं पाई जय जय देवी जय जगत जननी हस्त कमल वीणा विराजे जामे सब सुर गाए हस्त कमल वीणा विराजे जामे सब सुर गाई दूज हाथ विराजत पुस्तक वेद श्रुति उपजाई तेरो रूप भयो सब विधा सुर नर चरण नमाई तेरो रूप भयो सब विधा सुर नर चरण नमाई पद्मनाभ प्रभु चरण सरोरुह सेवक के मन भाई पद्मनाभ प्रभु चरण सरोरुह सेवक के मन भाई जय जय देवी जय जगत जननी जय जय सरस्वती माई जय जय देवी जय जगत जननी Thank you, Anaga. Respected President Sahitya Akademi Sri Madhav Kaushik ji, all the Bhasha Samman awardees present here, and distinguished writers, scholars, and honorable friends of Sahitya Akademi. I am glad to welcome all of you for this Bhasha Samman presentation ceremony.
Friends, Indian cultural traditions are ancient, rich, and vibrant. There are hundreds of cultures within the subcontinent. Each of those cultures have philosophies encompassing the entire human existence. Countless are the immortal expressions by distinguished poets, philosophers, playwrights, painters, logicians, storytellers, dancers, etc. in this land. The depth of these expressions is very deep and often unfathomable. These texts from the ancient and medieval India, containing exotic poems, lofty philosophies, and revolutionary thoughts, have been providing succor to millions of people and soothed many a wounded heart. They show the way out of the misery of everyday life and offer comfort. On scope, these literary and philosophical creations are not limited only to the life in the subcontinent, but to the entire humanity. The subjects and the focus may pertain to local elements and life, but they have large number of universal elements that they are applicable to the entire humanity. Not many literary creations from not many countries can stake such a claim. That is because universality and oneness of humanity is inherent in the DNA of Indian people, and it should not be a surprise then that the literary creations of the country have been reflecting that since ancient and medieval times. It is easy for people to sit and judge in the cozy comfort of shrunken borders and the era of globalization, but when one takes the survey of ancient and medieval texts from around the world, of course, not many were there in the ancient time, no other literature would come near the Indian creations regarding universality and all-embracing love. Though they became predominantly regional in the medieval time, still Indians continued to produce such all-embracing texts that were applicable to all the humans. In the contemporary time, during the past 4 or 5 decades, the interest in the classical and medieval literature was fast vanishing due to various factors. To encourage the scholars who take up the classical and medieval literary texts and bring them into the consciousness of masses, Bhasha Samman for classical and medieval literature was instituted by Sahitya Akademi. I am very glad that 4 eminent scholars are receiving their Bhasha Samman for their outstanding and meritorious research and writing into classical and medieval literature of India. When one talks of classical and medieval literature of India, it is commonly presumed that such a literature means only in a handful of languages, easily forgetting hundreds of languages have been in existence in India from ancient time. Till recently, much of Indian literature was oral in nature. No wonder, in ancient and medieval times, all the literary creations, barring few exceptions, were only oral in nature. So, those languages need to be preserved and the literature in those languages need to be promoted. One may wonder why this ascent on the preservation of languages. Well, one language vanishes from earth due to any reason. What is lost is not a mere loss of one tool of communication, but the loss of culture of that community in which the language was spoken. For language contains within it the history of that community, cultural components, and much more. Hence, loss of a language is a loss of one or more cultures. As I mentioned just now, when the language is restored and preserved, it is possible to propagate literature of that language. The languages of India from the ancient and medieval times are rich in content. To let go of such rich content is
a loss to us and loss for the future generations. As the world is slowly discovering amazing truths, lofty philosophies in the tribal languages of India, all the languages of the country had similar rich content. Bhasha Samman is presented also to those scholars who make outstanding contribution to the enrichment of the unrecognized tribal languages of India and unrecognized languages of India. Today, 3 scholars who made contribution to the enrichment of 2 unrecognized languages. I join the President of Sahitya Akademi in congratulating all the winners of Bhasha Samman today, Dr. Purushottam Agrawal ji, Dr. Bedawal Ram Brahmam Garu, Professor Avtar Singh ji, Dr. K.G. Bolos ji, Pandit Durga Charan Shukla ji, who could not attend this function due to his advanced age and health reasons, and Sri Rentile Lalrona ji and Sri Rojma Chauthun ji. I sincerely hope this award will spur them to make more and more outstanding works in the times to come. With these few words, I am glad to welcome all of you for this Bhasha Samman presentation ceremony. Thank you all. Now the Bhasha Samman presentation. Bhasha Samman carries 1 lakh rupee cash award. Of course, we give these days through bank. In a few minutes, once they receive, in a click, it will go to their account. All it electronic transfer award. Yes. And also a plaque and shawl that will be presented by President Sahitya Akademi. And Vice President Sahitya Akademi, because of her mother is not well, she couldn't make it here. So that role also I request President to. So first, the Bhasha Samman in medieval and classical literature. In North Zone goes to Purushottam Agrawal ji. पुरुषोत्तम अग्रवाल का जन्म 1955 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। अपने राजनीति विज्ञान तथा हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर तथा पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। आपको हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत भाषाओं का भी ज्ञान है। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में व्याख्याता के रूप में अपने कार्य जीवन की शुरुआत की तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में भारतीय भाषा केंद्र के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य आदि पदों पर रहे। आपकी रुचि के क्षेत्र में प्रारंभिक आधुनिक भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, नैतिक दर्शन, सिनेमा और रंगमंच, राजनीतिक प्रक्रम एवं प्रवृत्तियां शामिल हैं। आपकी अब तक 14 कृतियां प्रकाशित हैं, जिनमें कबीर ग्रंथावली, कबीर The life and work of early modern poet and philosopher, who is Bharat Mata, Padmavat, an epic love story, अखत कहानी प्रेम की, कबीर की कविता एवं उनका समय, शिवदान सिंह चौहान, विचार का अनंत तथा तीसरा रुख उल्लेखनीय है। आपकी कुछ कृतियां हिंदी, कन्नड़, अंग्रेजी, मराठी तथा तेलुगु भाषाओं में अनुदित है। आपको राजकमल कृति सम्मान, देवी शंकर अवस्थी सम्मान, मुकुटधर पांडे सम्मान, सुखदेव सिंह सम्मान तथा पंडित कमला प्रसाद त्रिपाठी सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है। कालजयी एवं मध्यकालीन साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए
पुरुषोत्तम अग्रवाल को वर्ष 2021 का उत्तरी क्षेत्र का भारत भाषा सम्मान प्रदान करते हुए साहित्य अकादमी गौरव का अनुभव कर रही है। थैंक यू सर। डॉक्टर बेतवोल राम ब्रह्म गारू। Bethel Ram Brahma was born in 1948 at Nallajela village of the West Godavari district in Andhra Pradesh. He did Bhasha Pravina, Masters in Telugu and Sanskrit from Andhra University, Visakhapatnam, and a PhD from Nagarjuna University, Guntur. His areas of specialization include classical literature of both Telugu and Sanskrit, Telugu grammar, aesthetics and translation. With a teaching experience of more than 4 decades, Bethuvolu Ram Brahman Garu retired as professor from the Department of Telugu, University of Hyderabad, and was later reappointed as professor in CCLT. Bethuvolu Ram Brahman has so far published 6 religious books and 16 books of poetry and criticism, besides 7 commentaries on Sanskrit plays and 17 on Telugu poetry. He has edited several works. Some of his books include Sriranga Srikantamu, Adhunika Vemana Satakamu, Yashodhara, Vyasa Gautami, Shakuntalam, and Soundaranandanam, Vyasa Pitika, Srimad Ramayanam, Sri Dattatreya Guru Charitra, and Sri Dwaraka Tirumala. He is the recipient of Pratibha Vaijayantika Award, AP Government Best Teacher Award, Sri Sarvaraya Sahitya Puraskaram, K. Rajamannar Award, Sahitya Akademi Prize for Translation, Presidential Award, Vachaspati title, Avadhani Sudharaka title, Swarna Kanakam twice, and Asthana Kavi, Sri Sivananda Murthy Puraskaram, among others. Sahitya Akademi is happy to confer its Bhasha Samman for the year 2021 for southern region of Bethuvolu Ram Brahman on his outstanding contribution to the field of classical and medieval literature. Thank you. Dr. Avtar Singh ji. Avtar Singh was born in 1962 in Dupalpur, Navan Shahar in Punjab. He holds a master's degree and MPhil from Punjab University. He knows English and Hindi besides Punjabi. With a teaching experience of 3 decades, he retired as associate professor from Ram Gariha College, Pagwara. Avtar Singh's publications include essayist Bhai Kapoor Singh, that is the research one, Sikh Saintan, that is essays, Ratan Wali, collection of profiles, Kichu Suniye, Kichu Kahiye, co-edited, Chingan, and Warku Guru Nanak, both edited. He has been writing columns and articles for several Punjabi journals and newspapers. His tasks have been broadcast on Akashvani and telecast on Doordarshan Jalandhar. He is a recipient of Bhai Sahib Sirdar Kapoor Singh
Yadgiri Puruskar. Sahitya Akademi is happy to confer its Bhasha Samman for the year 2023 for Northern Region on Avatar Singh for his outstanding contribution to the field of classical and medieval literature. Thank you. Dr. K.G. Paulos ji. Sir. K.G. Paulos was born in 1946 in Tiruvanniyur, Kerala. He has an MA in Sanskrit Sahitya, a PhD from University of Calicut, and D.Lit. Vachaspati from Rashtriya Sanskrit University, Tirupati. He knows Sanskrit, Malayalam and English with a teaching experience of more than 3 decades. Paulos held different academic positions including Principal of Government Sanskrit College, Tripunitura, Vice Chancellor of Kerala Kalamandalam, deemed to be University for Art and Culture, Founder Chairman of International Center for Kutiyattam, Tripunitura, among others. His areas of interest and specialization include promotion of classical art forms, ancient theatre, classical arts of Kerala, Kutiyattam, and comparative aesthetics. K.G. Paulos has 19 publications in English and Malayalam, including edited works to his credit. Some of his books are Natan Kusa, a critique in dramaturgy, and Kutiyattam, a historical study, Bhagavad-Dujika on Kutiyattam, and Vyangya Vyakya, the aesthetic of Dhwani in theatre in English, and Navotnantite, Niramintu, and Varaprasadam, Lagu Sankirtam, Lagu Sanskritam, Mela Perukam, Alochanamritam in Malayalam. He is the recipient of Abu Dhabi Shakti Award, C.P. Menon Smaraka Puraskaram, Manorama Tampuretti Puraskaram, Award for Eminent Sanskrit Scholars, O.K. Munshi Award, V.K. Narayan Bhattitri Smriti Puraskaram, P.T. Kuriyaku Master Award, among others. Sahitya Akademi is happy to confer its Bhasha Samman for the year 2023 for Southern Region on K.G. Paulos for his outstanding contribution to the field of classical and medieval literature. This Bhasha Samman in Mizo language, this time the jury decided to give it to 2 scholars. It is a giant award, giant Samman rather. Renthile Lalrona. Renthile Lalrona was born in 1940 at Dawn village of Longley district, Mizoram. He holds an MA in philosophy from Guwahati University. He knows Mizo and English. He retired as Joint Director, School Education from Government of Mizoram in 2003. Currently runs a printing press, Giljom Offset. Renthile Lalrona has 9 books to his credit besides 8 translated works. Some of his publications including Kuvale Tui,
Bengtuwartu, Fan Laljova, Chawang Kufa, Mother Teresa, Pope John Paul II, Joan of Arc, and Mizo Rohlu. His book Kwanglung Rum has been filmed. He received the Best Translation Book for the year in 2021 for his translation Davida. Sahitya Akademi is happy to confer its Bhasha Samman for the year 2023 on Rentre Lalrona for his outstanding contribution to the development of promotion of Mizo language. Another Mizo writer is Sri Rojama Changtu. Rojama Changtu was born in 1952 at Molkhang village, Mizoram. He holds a master's degree in political science, B.Ed and a PG diploma in journalism. He knows English and Hindi besides Mizo. Changtu began his career as a primary teacher in a higher secondary school and later served as its principal for 11 years. Rojama Changtu has 16 books in Mizo and 3 in English, besides 3 translations. He has written plays as well, and they have been staged. Few of his publications include Music Dictionary, Correct Usage of Mizo Language, Correct Usage of English, Counting of Time, Cricket for Beginners, etc. He is a recipient of the National Award to Teachers in 2001. Sahitya Akademi is happy to confer its Bhasha Samman for the year 2023 on Rojama Changtu for his outstanding contribution to the development and promotion of Mizo language. Thank you once again. I congratulate all the Bhasha Samman awardees and also thank the President Sahitya Akademi and all the jury members who selected these wonderful scholars and writers in respective fields. Now I request President Sahitya Akademi Sri Madhav Kaushik ji, who is an eminent Hindi poet himself, to address this august gathering. सादर नमस्कार। परम आदरणीय प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, श्री राम ब्रह्मम जी, श्री अवतार सिंह जी, श्री के.जे. पोलोस, श्री ललरोना जी और रोजमा और उनके सभी परिवारजन, साहित्यकार बंधुओं, मैं जब ये सेमिनार, जब ये सम्मान समारोह शुरू हुआ तो मेरे दिमाग में 2-4 बातें आई, वही आपसे साझी करूँगा। साहित्य अकादमी के जितने पुरस्कार हैं, सम्मान हैं, भाषा सम्मान उन सबसे अलग है। बाकी जितने भी हमारे पुरस्कार हैं वो पुस्तक केंद्रित हैं, बुक सेंटर्ड हैं। अकेला ये एक पुरस्कार ऐसा है जिसमें हम विद्वान का चयन करते हैं और एक तरह का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। ये इसकी खास बात ये है। दूसरी बात ये है कि कालजयी और मध्यकाल की जितनी हमारी रचनाएं हैं, अब आप एक बार इस डायस की तरफ देखिए, पूरा उत्तर और दक्षिण भारत और पूरा नॉर्थ ईस्ट बैठा हुआ है।
ये बड़ा अद्भुत संयोग होता है। कभी कभार हम सुनते तो रहते हैं कि भारत एक है, विविधता में एकता है, लेकिन उसके दर्शन कभी कभार होते हैं। आपको लगेगा कि संपूर्ण भारतीय मनीषा और मेधा एक साथ यहाँ बैठी हुई है। ये इसकी सबसे बड़ी बात है। मित्रों, हम जो भी किताब छापते हैं उस किताब के अंत में एक डॉक्टर राधा कृष्णन की एक स्टेटमेंट छपी होती है, इंडियन लिटरेचर इज वन दो इट इज रिटन इन मैनी लैंग्वेजेस। चाहे भारत की किसी भी भाषा का साहित्य है, उसकी संवेदना, उसकी सोच, उसके सरोकार एक जैसे हैं, आपको लगेगा ही नहीं। अब उत्तर भारत के हमारे दो विद्वान अवतार जी और पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, दक्षिण भारत के दो मध्यकालीन और कालजयी साहित्य के अध्येता विद्वान, और उन्हीं के साथ वो भाषाएं जो मान्यता प्राप्त भी नहीं है, बोलियां हैं। और आप हैरान रहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट को तो वी कैन कॉल म्यूजियम ऑफ लैंग्वेजेस, वो तो भाषाओं का एक अजायब घर है। और उस अजायब घर में से, इतनी सारी विविधताओं में से, साहित्य अकादमी ने ये जो भाषा सम्मान का आयोजन शुरू किया, चयन शुरू किया, ये अपने आप में विशिष्ट है। और इसकी विशिष्टता इस बात में भी है कि उत्तर और दक्षिण दोनों के मध्य सेतु का काम इन कालजयी रचनाकारों ने ही किया था, जो उस समय लिखी गई थी। जिस भारतीय मन की, भारतीय मानसिकता की, इंडियननेस की हम बात करते हैं, वो उसी साहित्य ने पैदा की है। हमारे वो एक तरह का डीएनए का एक हिस्सा है। और एक जो सबसे बड़ी बात है, कई बार पिछले वर्ष फ्रैंकफर्ट में वहाँ एक बुक फेयर था, उसमें मैं और राव साहब गए थे, भारत के और भी बहुत सारे लेखक थे। वहाँ एक मेरे से सवाल, महाभारत हमारे घरों में रखने की पाबंदी है पूरे देश में। महाभारत के प्रति कोई युवा ले आता है तो बुजुर्ग कहते हैं घर में लड़ाई होगी, इसको छोड़ के आओ मंदिर में। महाभारत किसी घर में नहीं है विद्वानों को छोड़ के, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का हर व्यक्ति महाभारत की पूरी कथा जानता है, उसके सरोकार जानता है, और सत्य असत्य के मध्य जो हुआ सब कुछ जानता है। उस आम आदमी के पास वो जो रामायण महाभारत, हमारे जितने स्क्रिप्चर्स हैं, ये सब संस्कृत में थे। उनको ना पढ़ने वाले थे, इतने साक्षर भी नहीं थी आम जनता। उस आम जनता तक उस सारी चीज को पहुंचाने का काम हमारे मध्ययुगीन इन लेखकों ने किया है, वही काल। और उस भाषा में क्या, जिसमें आम आदमी बोलता है, ये इतना बड़ा काम हुआ। वो हमारे लोक गायक हैं, लोक कवि हैं, कबीर, तुलसी, जायसी। दक्षिण की वो जो हमारी भक्ति मूवमेंट है, वो तो दक्षिण से उत्तर की हो रहा है। तो ये सारी चीजें कई बार हैरान करती हैं। क्यों? अब तीजन बाई ने तो महाभारत नहीं पढ़ा, लेकिन जब वो पांडवानी प्रस्तुत करती है, आपको लगता है वो लोग जो निरक्षर थे, उन्होंने उस पूरी भारतीय परंपरा, पूरी भारतीय साहित्य, पूरे भारतीय साहित्य का जो बहुत बड़ी महान चीजें हैं, ह्यूमन डिग्निटी को डिविनिटी से जोड़ने का काम इन लोगों ने किया है। और उन लोगों को हम तक पहुंचाने का काम इन महापुरुषों ने किया है। हम इनके वाकई आभारी हैं। ये ऋषि परंपरा का सम्मान, वही ऋषि परंपरा का सम्मान है जिसके लिए हम आज भी जाने जाते हैं और हिंदुस्तान भी जाना जाता है। तो मित्रों, हमारे लिए आज का ये जो समारोह है, सम्मान अर्पण समारोह है, ये एक तरह से भारतीयता का एक उत्सव है। हम इसको उत्सव की तरह मनाते हैं और इन सब से आशीर्वाद लेते हैं। ये आशीर्वाद लेने का साहित्य अकादमी सच में गौरवान्वित अनुभव करती है। मुझे याद आया, शायद ओडन का एक शेक्सपियर पे सोनेट है, उसकी लास्ट लाइन है, सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंड एंड सेल्फ ऑनर्ड। ये सब इतने ही महान लोग हैं, इनका सम्मान कौन कर सकता है, तो अति सम्मानित है। हाँ, इनका सम्मान करके हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है।
और दूसरी सौभाग्य की बात है कि हम उन लोक भाषाओं को भी केंद्र में रखते हैं। हालांकि साहित्य अकादमी को 24 भाषाएं जो मान्यता प्राप्त है उन्हीं की सेवा का अवसर है, लेकिन पिछले 10-15 वर्षों से हमारे केंद्र में वो लोक भाषाएं भी हैं जिसमें वाचिक परंपरा में बहुत काम हुआ है, जिनका भी स्क्रिप्ट भी डेवलप नहीं हुआ है। हम उनके लिए भी इतने बड़े आयोजन करते हैं और एक तरह से लोक भाषाओं का सम्मान और कालजयी साहित्य मध्ययुगीन हमारे साहित्य का सम्मान हमारी परंपरा का सम्मान है। और इस परंपरा के समक्ष हम श्रद्धानत हैं और इन विद्वानों के बड़े आभारी हैं जिन्होंने वो जो बड़ी रचनाएं उस समय हुई थी वो युवा पीढ़ी तक पहुंचाई हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Now we request all the award winners to say a few words. They are, of course, I think we have already circulated. Okay, we have circulated, but let them say in addition to what they have already circulated or something from that itself. So सबसे पहले मैं विनती करता हूँ कि प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी से। मंच पर और सभागार में उपस्थित मित्रों, मेरा वक्तव्य जैसा कि कहा गया वितरित किया जा चुका है। मैं उसके केवल कुछ हिस्से पढ़ूंगा और मेरा ख्याल है 5-6 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। ये सम्मान अर्जित करना मेरे लिए गौरव की बात है। साहित्य अकादमी का आभार। जिज्ञासाओं के जिस रूपायन ने मुझे इसका पात्र बनाया उसके बारे में बात करने के पहले उनका कृतज्ञ स्मरण, जिनके कारण ये जिज्ञासाएं बनी रहीं, मुझे करती रहीं। बचपन से ही मेरे मन में ईश्वर, जगत, परिवार आदि को लेकर अजीब ख्याल आते थे। माँ बाप को, भाइयों को, बहन को गर्व होता था, कुछ चिंता भी, क्योंकि मान्यता थी कि ऐसे बालक दीर्घजीवी नहीं होते, हों भी तो जीवन में विफल और परेशान रहते। इसलिए मुझे सुधारने के प्रयत्न भी चलते रहते थे। मेरी माँ कमला देवी भी आशंकित रहती थी, लेकिन मेरी जिज्ञासाओं के सही दिशा में विकास के लिए उत्सुक थी। असल में वो मेरी पहली मित्र थी। वो लिख नहीं सकती थी, क्षमा कीजिएगा, वो लिख नहीं सकती थी, लेकिन तरह तरह के उपन्यास पढ़ती खूब थी। उसी के संग्रह ने मेरा परिचय प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री से भी कराया और गुलशन नंदा, ओम प्रकाश शर्मा और इब्ने सफी बीए से भी। मैं जीजी यानी माँ की उम्मीदों पर कितना खरा उतर सका ये तो नहीं जानता, लेकिन ये सम्मान स्वीकार करते हुए वो मुझे याद बहुत आ रही है। अध्ययन और सोच विचार की दिशा मिली श्री प्रकाश दीक्षित के कारण। प्रकाश जी पिछली सदी के 7वें-8वें दशक में ग्वालियर के सभी स्वप्नजीवी युवाओं के चुंबक थे। असल में प्रकाश जी के एक मित्र उन्हें एक प्रजाति विशेष का चुंबक कहा करते थे। उस शब्द का यहाँ उच्चारण करना अश्लीलता दोष हो जाएगा, इसलिए मैंने स्वप्नजीवी युवा लिख दिया है। स्वप्नजीवी युवाओं के चुंबक थे। उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया, बल्कि बाध्य किया कि कितनी भी मेहनत करनी पड़े जेएनयू में दाखिला लूँ। प्रणाम करता हूँ प्रकाश जी की स्मृति को। जेएनयू में दाखिले पर प्रकाश जी ने कहा था, एमए तो खैर कहीं से भी हो जाता, बड़ी बात यह है कि तुम्हें नामवर सिंह से पढ़ने का अवसर मिलेगा। नामवर सिंह की विख्यात व्याख्यान कला के अनजाने और अधिक प्रामाणिक आयामों का आस्वाद उन्हीं को मिला है जिन्होंने नामवर सिंह को क्लासरूम में सुना है। एमए के दौरान कबीर में दिलचस्पी गहरी हो गई। मैंने एमए करते करते ही ठान लिया था कि रिसर्च कबीर पर करनी है और नामवर जी के ही साथ करनी है। उनके निधन के कुछ महीने पहले तक उनकी डांटें भी बहुत ही स्नेहपूर्ण सराहना भी पाई। अकत कहानी प्रकाशित होने के कोई साल भर बाद उन्होंने कहा था कि अब एक पुस्तक तुलसीदास पर भी मेरे रहते रहते लिख दो,
तो संतोष के साथ जा सकूंगा। मैंने वादा तो कर दिया, उनके जीवन काल में निभा नहीं सका। ये गुरु ऋण उतारना ही है। प्रणाम करता हूँ नामवर जी की स्मृति को। मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ अनसीखा। सीख अनसीख की इस प्रक्रिया में दो बुनियादी बातें साफ हुई। सत्य का कोई कथन अंतिम होने का दावा नहीं कर सकता। सत्य के अनेक पहलू होते हैं। किसी भी बात का आकलन उनमें से यथासंभव अधिक से अधिक बहुत ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। अभिनव गुप्त को याद करता हूँ, न ही एक ही दृष्टिया सम्यगम निर्वर्णनम निर्वहति। दूसरी बात यह कि जन्म संयोग मात्र के आधार पर किसी मनुष्य को उसकी जाति, धर्म, जेंडर, नस्ल कुछ भी हो, ऊंचा या नीचा नहीं माना जा सकता। जिस काम के लिए मुझे ये सम्मान मिला है उसके बारे में मैंने विस्तार से अपने वक्तव्य में कहा है, लेकिन यहाँ केवल एक रूपक के जरिए अपनी बात स्पष्ट कर दूँ। आप सब लोगों ने, मेरी पीढ़ी के लोगों ने तो निश्चित रूप से, और बाद के लोगों ने भी मशहूर फिल्म गाइड देखी होगी। उसका एक दृश्य मेरे मन में बस गया था और वो मेरे लिए एक रूपक बन गया, आज तक बना हुआ है। जब वो राजू गाइड जेल से छूटकर गांव में पहुंचता है और गांव वाले उसे साधु संत समझने लगते हैं, तो गांव के हितों पर असर पड़ता है, इसका विपरीत असर पड़ता है। तो वो राजू की इज्जत कम करने के लिए एक दिन उसे घेर के संस्कृत बोलने लगते हैं। अब राजू पर जवाब देते नहीं बनता, वो तो संस्कृत जानता नहीं है। तो कहते हैं बोलेंगे क्या, संस्कृत आती हो तब ना। अब राजू की नाक का भी सवाल है, रोटी का भी सवाल है, वो अंग्रेजी में शुरू हो जाता है। पुरोहितों को अंग्रेजी नहीं आती है, तो राजू कहता है कि बोलेंगे क्या, अंग्रेजी आती हो तब ना। मित्रों, जो लोग ना संस्कृत या फारसी बोल सकते हैं और ना अंग्रेजी, उनकी बात सुने बिना ना भारतीय चित्त को समझा जा सकता है और ना भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को। ये सबक है। भारतीय जीवन की रीत भांत, चाल चलगत, आजकल की शब्दावली में जैसे एवरीडे प्रैक्टिस कहते हैं, उसका प्रामाणिक बोध प्राप्त करने के लिए देश भाषा स्रोत अनिवार्य है। लेकिन मैं इसके साथ जोर देकर कहना चाहता हूँ, आजकल भी उपनिवेशीकरण की बहुत चिंता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, और ये चिंता मेरी किताबों में 25 साल से मौजूद है, लेकिन मैं ये जोर देकर कहना चाहता हूँ कि विउपनिवेशीकरण का आशय यूरोपीय आधुनिकता और तत्जनित प्रबोधन यानी 18th सेंचुरी एनलाइटनमेंट के यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का नकार नहीं हो सकता। देशज आधुनिकता का अर्थ आधुनिकता के सार्वभौम प्रस्थानों का नकार नहीं है। दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई, आजकल विशिष्टता और अंतर के नाम पर सार्वभौम नैतिक प्रतिमानों और ऐतिहासिक लेखन और आकलन पद्धतियों को निरंतर संदिग्ध बनाया जा रहा है। मेरा मानना है कि सार्वभौम और विशिष्ट का, समानता और अंतर का संबंध कभी नहीं भूलना चाहिए। रोजमर्रा के जीवन से ही मिसाल लें तो हम लोग आमतौर से हाथ से खाते हैं, यूरोप में लोग छुरी कांटे से खाते हैं, चीन, जापान, दक्षिण एशिया के अन्य देशों में चॉपस्टिक से खाते हैं, लेकिन खाते सब मुंह से ही और किसी अंग से नहीं खाते। मित्रों, जैसा मैंने कहा कि वो आलेख आपके सामने, आप उसे पढ़ सकते हैं, वो पर्याप्त विस्तार से है। एक बात और जो अनुभवों, जो मेरे अब तक के काम का निष्कर्ष है, इतने लंबे अरसे से इतिहास लेखन, खासकर बौद्धिक इतिहास लेखन करते हुए मेरी ये मान्यता दृढ़तर होती गई है कि हम अतीत से बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन तभी जबकि अतीत के अतीतपन का सम्मान करते रहे। ऐसे सम्मान के बिना अतीत जीवी बनने, वर्तमान को अतीत के हिसाब किताबों को दुरुस्त करने या इतिहास को दोहराने के प्रयत्नों का नतीजा विख्यात है। त्रासदी या भड़ैती, ट्रेजेडी या फास। कवि कथा नटी सुमन केसरी मेरी जीवन संगिनी ही नहीं, साथ ही शोधार्थी भी हैं। अपने शोध में उन्होंने सूरदास के भ्रमर गीत का विचारोत्तेजक अप्रत्याशित पाठ प्रस्तावित किया है। कबीर से लेकर जनगोपाल तक की शोध यात्रा में, जो अब मेरी नवीनतम पुस्तक है, मेरी और डेविड लॉरेंजन की, पता नहीं प्रकाशक महोदय हैं या नहीं हैं, लेकिन वो किताब अगले महीने आ रही है। इनमें सुमन जी की सहायता हमेशा मुझे मिलती रही है, वो भी अपनी रिसर्च करती रही हैं। हम दोनों की ये शोध यात्रा जारी रहे, इस कामना के साथ एक बार साहित्य अकादमी का फिर आभार। एक बात और कहना चाहता हूँ, आपने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात की, ये फिल्मी जगत से लिया गया मुहावरा है
और फिल्मों में लाइफ टाइम अचीवमेंट तब दिया जाता है जब वो कम्युनिटी कन्विंस हो जाती है कि अब आगे कुछ करने धरने को है नहीं। आपको याद होगा कि सत्यजीत राय को अकेडमी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनके घर आके दिया गया था। इसी तरह हर साल हम लोग देखते हैं। मुझे अपने बारे में विश्वास है और बाकी साथियों के बारे में भी कि हम आपके इस अवार्ड को अब कुछ करने धरने के लिए नहीं बचा है ऐसा वक्तव्य मानकर ग्रहण नहीं करेंगे। बहुत काम बाकी है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हम ये मानते हैं कि साहित्यकार कभी बूढ़ा ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाउ I request Professor Betawal Ramram garu. साध्यक्षायै सभायै नमः। अध्यक्ष महोदयेभ्यः, भाषा सम्मान पुरस्कार ग्रहीतृभ्यः, सभायां विद्यमानेभ्यः, साहित्यादि सर्वकलासु प्रवीणेभ्यश्च सादरं भूयांसि नमांसि। Just I would like to take this opportunity to render one shloka and one Telugu poem, just to make how a Telugu scholar renders a shloka and how a Telugu scholar renders a Telugu poem, just to give some taste. This shloka is of our Telugu first poet Nannaya. He started his translation of Andhra Mahabharatam with this shloka. Salutations to three gods, Vishnu, Shiva and Brahma, and their concerts. Shrivani Girijaschiraya Dadhato Vaksho Mukhangeshu Ye. Shrivani Girijaschiraya Dadhato Vaksho Mukhangeshu Ye. लोकानां स्थितिमावहन्ति अविहतां स्त्री पुंसयोगोद्भवां। ते वेदत्रयमूर्तयः त्रिपुरुषाः सम्पूजिता वस्सुरैः। भूयासुः पुरुषोत्तमाम्बुजभव श्रीकन्धराश्रेयसे। भूयासुः पुरुषोत्तमाम्बुजभव श्रीकन्धराश्रेयसे. He started his work with this shloka, and till this time that classical genre is alive, blossoming and continuing till this day in Telugu literature. I am proud to say this one. And just have the taste of a Telugu poem also. Sarapu dharmamun vimala satyamu papamu cheta bonkuche paramu bandaleka. Sarapu dharmamun విమల సత్యము పాపము చేత బొంకుచే పారము బందలేక చెడబారినదైన వ్యవస్థ దక్షులెవ్వారలుపేక్ష చేసిరి అది వారల చేటగుగాని. సత్య విస్తారకమయ్యు ధర్మ విస్తారకమయ్యు సత్య శుభదాయకమయ్యును దైవముండెడిన్. There is God who protects truth and dharma. If you are able to protect them, it is your luck. If you don't, he is there to look after those things, and he is there to look after you also. Sarapu dharmamun vimala satyamu పాపము చేత బొంకుచే పారము బొందలేక చెడబారినదైన వ్యవస్థ దక్షులెవ్వారలుపేక్ష చేసిరి అది వారల చేటగుగాని. ధర్మ విస్తారకమయ్యు సత్య శుభదాయకమయ్యును దైవముండెడిన్. So with this salutation, it is
Incidentally, this 29th of August is Telugu Bhasha Dinotsavam. So, I am very, very, very happy to receive this Bhasha Samman as a representative of my classical Telugu poets and the scholars who worked, who made me also. So, I am dedicating this award in all of your presence to our great Telugu poets. That's it. I am accepting this honor of Bhasha Samman in reverential humility as a dakshina for my Vyakhyana Dirgha Satrayaga. I am doing it from several years, so it is a dakshina for the work I am doing. So I am taking this dakshina as my dakshina of my Vyakhyana Dirgha Satrayaga, my relentless interpretation of classical Telugu poetry and Sanskrit plays into colloquial Telugu to facilitate a ready understanding for the modern reader who is not trained in that field. I am deeply beholden to the jury who selected me for this honor and also to the President, Vice President, Secretary and staff of Academy. On this propitious occasion, I submit 2 proposals before this august body. Here, I would like to say one thing. What is the purpose of classical poetry, or to that matter for any poetry? What is the real purpose? Our Alankarikas described it in a simple way. This main purpose of classical poetry or literature is to enhance the tenderness of heart, the Hridaya Mardavam. We call it in Sanskrit Hridaya Mardavam, Hridaya Saukumaryam. That is, they call it as Sattva Guna. There is another Sattva Guna in philosophy, that is a different Sattva Guna. This Sattva Guna in literature, they described it as Paragata Sukha Dukkhanubhavanaya Bhavitantah Karanatvam Sattvam. Paragata Sukha Dukkhanubhavanaya Bhavitantah Karanatvam Sattvam. So, that Sattva Guna should be there in the society so that the society will be happy. I am ready to take part in the joys and sadness, sorrowness of my neighbor. Then the society blossoms like anything. Though the purpose of classical literature, or to the extent any literature, is to make the human heart more tender and tender, more Sattva Guna, to improve more Sattva Guna. Okay? On this, I submit 2 proposals before this august body. India has recorded exponential growth during the past 7 decades, simultaneously witnessing phenomenal increase in the number of writers in all Indian languages. By the same token, the genres of literature have shot up. Hence, I feel there is a need to increase the number of awards significantly by the Kendra Sahitya Akademi according to the genres. I propose the introduction of Bhasha Samman for each language and Kendra Sahitya Akademi for each literary genre. This genre is a typical word. Its pronunciation has different shades. Somebody pronounces it as genre, somebody like that. I prefer to pronounce it as genre. From my understanding of Telugu literature, I think the framework can be broadly on these lines. One for poetical or lyrical composition written in adherence to the norms of prosody, one for free verse, one for drama, one for short story, one for novel, one for scholarly interpretation, that is Vyakhyana Sampradaya, one for modern criticism, and one for apolitical anthology of editors, written by editors, apolitical anthologies. Thus, I appeal for enhancement of the number of awards to at least 8 or 9 of now. This would also help, please note this point, sir. This would also help appease the disgruntled writers and help accord due respect to all the important genres across all languages in the country.
which is the responsibility of the academy, I think. It would be relevant to propose the constitution of specialized juries for each genre so as to ensure justice to every literary form and language. My second proposal, the academy has been encouraging translation with a special award. I myself received it in 2003 for my translation of Devi Bhagavatam. I have an ancillary proposal in this context. Today, we are equipped with the latest technologies like artificial intelligence and even machine translations. The responsibility of making a word bank available for optimum utilization and application of these technologies rests with the academy, I think. A comprehensive dictionary that encompasses all Indian languages needs to be brought out. This will be encyclopedic in nature with the inclusion of Sanskrit, all the Prakrits, please note down, all the Prakrits, and all the regional languages following international phonetic script that will be more useful and friendly to this computers. This is going to be a mammoth project, I know. I request the Kendra Sahitya Akademi to initiate the process by constituting an expert committee with linguists of varied specializations to design the required roadmap. If the idea of this dictionary realize, this will help reinforce national integration from a linguistic point of view, and also, please kindly note down, and also throw light on the intentions of the West in the division of language families in India. The intentions of the West in the division of languages in India, language families in India. So, I thank one and all, and once again I thank Academy, President, Vice President, Secretary, and the jury who got me this opportunity to receive this great honor and say a few words with you. Thank you very much for your patience listening. Thank you, sir. Thank you, sir, for your wonderful rendition of poem in Sanskrit and also Telugu, and also the suggestions that you gave, particularly two suggestions. First one, anyway, it will be very difficult. Outrightly we can say no to it, that is better, because otherwise everyone will keep a hope of it. Though it is a good, but being a governmental organization, because genre-wise award, it will be very difficult. Institution like Sahitya Akademi, and also increasing awards, the language like Hindi, which has been almost state language of 8 to 9 states, and half of the India speak Hindi, but still they also have one, but still they don't have that kind of demand. But that is another thing. And Bhasha Samman we give, there are only two categories. One is story or poetry like this. So that is why our earlier management, who were, I think in 1996, Professor U.R. Anantamurthy was the president. At that time he thought that these people also should be considered, those who are working in medieval and classical literature, they should be given a honor in this particular field. So that is why every year we give 2 Bhasha Samman to medieval and classical literature field, and 4 Bhasha Sammans to unrecognized languages. And unrecognized languages, it is in a cycle system. As our president has mentioned, Northeast itself has a ball of languages. Even in Orissa, there is one district called Koraput. They have 64 languages in one district. So like that, India has so many languages. How will they will be encouraged? Because recognized is only 24. So they won't come. This Tulu and Mizo language is the state language of Mizoram, but it is not in the 8th schedule, not recognized by the Sahitya Akademi. Like Khasi, it is a state language of Meghalaya, but it is not a 8th schedule languages. So to promote that kind of languages, this Bhasha Samman.
but not for the mainstream 22 languages, but Sahitya Akademi recognized 2 more, that is Rajasthani and Indian English. So this second thing, it is very need of the hour. We appreciate your suggestions. It is a, as you suggested, yourself said, it is a very big task that, but we should start that process. In government, there are some departments that are already working on it, but we can also try academy. So that will be helpful for our future translators and all. Thank you so much. Now I request Professor Avatar Singh ji. पहले मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि कुछ महीने पहले इसी हाल में एक सेमिनार था, उसमें मेरा एक पेपर था मध्यकाली साहित्य पर, भक्ति साहित्य पर। तो उस समय मेरे को ये पता नहीं था कि इसी हाल में कुछ महीनों के बाद मुझे ये भाषा सम्मान मिलेगा, और वो भी मध्यकाली साहित्य पर और क्लासिकल साहित्य पर। साहित्य अकादमी के प्रांगण में उपस्थित मान्यवर सज्जनों और इसके प्रधान डॉक्टर माधव कौशिक जी, मेरा जन्म साधारण घर, परिवार और गांव में हुआ। मैंने एक छोटी सी इमारत वाले सरकारी स्कूल में पेड़ों के नीचे पढ़ाई की। मुझे बारिश से बचने के लिए उसी बोरी को ऊपर लेना पड़ता था जिसे नीचे बिछाकर स्कूल में पढ़ता था और घर आकर होमवर्क करता था। वह टिफ़िन और थर्मस का ज़माना नहीं था, बोरी ही हमारी स्कूलियत और सहूलियत थी। उन दिनों में पढ़ने वाले की मशहूर छेड़ थी कि बगल में बोरी, पीठ पे बस्ता, यही है स्कूल का रास्ता। बेशक तंगी और मुश्किलों ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन पढ़ने की तीव्र चाहत ने मुझे ऐसे अध्यापकों की नज़र में रखा कि मैं एक अध्यापक बन गया। कहते हैं पारस किसी को सोना बना सकता है, पारस नहीं बना सकता, लेकिन अध्यापक किसी को अपने जैसा अर्थात अध्यापक बना सकता है। अपने परिवार की देखरेख करते हुए और कॉलेज की सेवाएं निभाते हुए भी मैं अपने आप को सामाजिक और बौद्धिक सरोकारों से कभी अलग नहीं कर सका। इस वजह से ही आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है। यहाँ आकर मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है कि मैं बता नहीं सकता। आज हमारे देश के लोग हर बात के लिए पश्चिम की ओर देखते हैं। कम लोग जानते हैं कि हमारे पास भी उनको दिखाने के लिए कुछ है। पूर्व के कवि कहे जाते इकबाल साहब ने भारत के बारे में कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। पंजाब की धरती पर ऋग्वेद की रचना हुई और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन हुआ। सनातन सत्य ऋग्वेद में और गुरुमत गुरु ग्रंथ साहिब में प्रकट हुए। मैं समझता हूँ ऋग्वेद से लेकर गुरु ग्रंथ साहिब तक की आध्यात्मिक यात्रा वही बात है जिसके महत्व को समझना और आगे लेकर जाना हमारा बौद्धिक सरोकार है। मानता हूँ कि सफ़र सिर्फ फूलों से सजा हुआ नहीं होता, कहीं कहीं कांटे भी बिखरे होते हैं। अपनी आलोचनात्मक दृष्टि से कांटों को हटाकर फूलों को सजाकर हमने आगे बढ़ना है। इस सरोकार के प्रति समर्पित रहते हुए
मैं पढ़ने, समझने और लिखने की कोशिश करता रहता हूँ। मैं बड़ी देर से लगातार अखबारों, पत्रिकाओं और किताबों में लिखता रहा हूँ। मेरी अपनी भी किताबें हैं, लेकिन अब डिजिटल मीडिया का युग आ गया है। मैंने देखा है कि अभी कुछ लोग इस मीडिया को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मैंने इस माध्यम को एक किताब की तरह गंभीरता से लिया और अपनी यथाशक्ति क्षमता से इसका इस्तेमाल किया। मैं सोचता हूँ कि कागज़ का महत्व भले ही कम हो जाए, लेकिन लेखन का महत्व सदैव बना रहेगा। पंजाब के लोकप्रिय कवि सुरजीत पात्र जी ने अपनी काव्य पुस्तक हवा विच लिखे हरफ में लिखा, बलदे हत्थां ने जेड़े हवा विच लिखे हरफ वही हमेशा लिखे रहेंगे। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि साहित्य अकादमी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में लिखा कि मुझे दिए जाने वाले भाषा सम्मान के लिए मेरी पुस्तकों के अलावा पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी, सेमिनार, सम्मेलन और डिजिटल मीडिया के उपयोग पर भी विचार किया है। मैं साहित्य अकादमी को इस पहलकदमी के लिए बधाई देना चाहता हूँ, जिसने मेरे हवा में लिखे हुए हर्फ भी ध्यान केंद्रित किया है। आज पूरे विश्व का समाज तंगदिली के दौर से गुजर रहा है, जिससे बाहर निकलने का रास्ता शायद साहित्य ही हमें दिखा सकता है। आज विश्व को ऐसे ही साहित्य की ज़रूरत है जो जड़ से भी जुड़ा हो और आसमान की ओर भी बढ़ रहा हो। ऐसे साहित्य के लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने, सोचने और समझने की ज़रूरत है। मैं जब भी कुछ लिखता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि जो भी लिखूँ कुछ ऐसा ही लिखूँ जो जड़ को भी न छोड़े, आसमान की ओर भी बढ़े और जिसका आदर्श सर्वत्र का भला हो। मेरे अत्यंत विनम्र प्रयास को साहित्य अकादमी द्वारा मेरी अपेक्षा से भी अधिक सम्मान मिलने से पुरस्कृत किया गया है। मैं साहित्य अकादमी का तहे दिल से आभारी हूँ और साहित्य अकादमी को यकीन दिलाता हूँ कि मैं हमेशा पढ़ने, सोचने और लिखने में ऐसे ही सेवा करता रहूँगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आज मुझे ख़ास तौर पर मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता याद आ रहे हैं। मेरा जैसे बताया छोटा सा गांव था। मेरे माता पिता अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने किसी न किसी तरह से गुरमुखी सीखी हुई थी और मेरे पिताजी ने मेरे गांव के बहुत सारे लोगों को गुरमुखी में हस्ताक्षर करने सिखाए हुए थे, साइन करने सिखाए थे। और आज भी कुछ लोग कहते हैं कि मैंने साइन करने आपके पिताजी से सीखे थे। और मेरी माता ने गांव की बहुत सारी औरतों को सुखमनी साहब, जपजी साहब पढ़ना सिखाया था। वो इतना ही जानते थे, लेकिन मैं समझता हूँ उनके अंदर एक अध्यापक या अध्यापन का एक शौक़ था। बेशक वो सिग्नेचर करते थे या सिखाते थे या गुरमुखी, सुखमनी, जपजी सिखाते थे और शायद मैं उसी वजह से भी एक अध्यापक हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेरे को बहुत अच्छे अध्यापक मिलते रहे हैं जिनसे मैं क्लास में बैठकर पढ़ता रहा हूँ। और उसके बाद जब मैं पढ़ाता भी रहा 30 साल, और मेरे अंदर का जो विद्यार्थी था वो हमेशा कायम रहा। और मैं समझता हूँ जो विद्यार्थी नहीं रहता वो अध्यापक भी नहीं होता। तो मैं आज भी विद्यार्थी हूँ। मेरे सामने पद्मश्री कपिल कपूर जी बैठे हैं। ये मेरे डायरेक्ट अध्यापक नहीं रहे, लेकिन मैं इनको अध्यापक मानता हूँ। टेलीफोन पर इनसे अक्सर बातें करता हूँ। जो मेरे को बातें नहीं समझ लगती वो इनसे पूछ लेता हूँ। तो इनके जो विद्यार्थी हैं मिश्रा जी, और उसके जो विद्यार्थी हैं सोलंकी जी, उनसे भी मैं बातें करता रहता हूँ। ख़ास तौर पर वो संस्कृत के अध्यापक हैं और बहुत गूढ़ संस्कृत की बातें जो मुझे नहीं समझ लगती मैं आज भी उनसे सीखता हूँ। बेशक मैं
एक अध्यापक रिटायर हो गया हूँ, पर मेरे अंदर वाला विद्यार्थी जो है वो अभी रिटायर नहीं हुआ। तो जो भारतीय विश्व की दर्शन के जो मूल 3 प्रश्न हैं कि ज्ञान क्या है, जिसे हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, दूसरा मैं कौन हूँ, जिसे हम ऑन्टोलॉजी कहते हैं, तीसरा मेरा मकसद क्या है, जिसे हम टेलियोलॉजी कहते हैं। ये 3 ही प्रश्न हैं जो असल प्रश्न हैं, और इनकी खोज में, इनको जानने के लिए हमारी सारी उम्र लग जाती है। मैं इन 3 प्रश्नों को समर्पित हूँ। बस इन्हीं बातों से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अवतार सिंह जी। नाउ आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर के जी बोलेस जी टू address this august gathering. Respected Chairman, scholars, and the enlightened audience. At the outset, let me express my profound gratitude to the Kendra Sahitya Akademi for bestowing upon me this great honor. I am nearing 80 years of age, and I believe that this honor comes to me as a recognition of the cause that I have passionately pursued all through my life. They are: 1. Promotion of Sanskrit language and the culture enshrined in it. 2. Study of Natya Shastra and its tradition as followed in the south, especially Kerala. I had the good fortune of learning Sanskrit from the early days in school, and later on the opportunity to serve in various positions as professor and principal of the 3 traditional Sanskrit colleges in the state. Kerala is the land of Shankaracharya. I was instrumental in incubating as the first registrar the great university in the Acharya's name at Kaladi, his birthplace. Our attempt always was to promote Sanskrit studies, making it relevant to contemporary needs of the society. The launching of a school of Vedic studies in the university has made admirable results in this direction. The ancient mode of Jaiminiya Sama Veda chanting was at the verge of extinction in Kerala. The ancient mode of Jaiminiya Sama chanting was at the verge of extinction. The 5 scholars alive in this tradition were at the age of 80s. Unfortunately, none of them are alive now. We could, with great difficulty, record this tradition. We could, with great difficulty, record the entire chanting, extending 100 hours, and preserve it.
for posterity. Similarly, I could intervene to preserve the ancient Kautuma Sama chanting of Tanjavur. I have often wondered how as to how destiny made me a tool in achieving the Kautuma chanting of Tanjavur, and also the Jaimaniya chanting of Samaveda, which now would have extinct. The thought makes me humble. I have also got an opportunity as the general editor to bring all the 18 Mahabharanas in Malayalam in a series leading a team of scholars. Kerala has contributed, this is about Sanskrit. Now I am going to tell about Natyashastra. Kerala has contributed much in preserving Natyashastra tradition alive. She preserved the Abhinava Bharati of Abhinava Gupta, Bhasa plays, and the only remaining relic of the ancient style of acting in the form of Kudiyatam, which now has been recognized by UNESCO as an intangible heritage of humanity. A royal dramatist of Kerala in the 10th century of Common Era wondered as to how people turned to theatre houses to watch Sanskrit plays when they already knew the story from the epics. He realized that it was not the theme but the acting that attracts the audience. He applied the doctrine of Thuni to the stage. A great Natyashastra scholar in his assembly noted down and recorded these innovations under the name Vyangya Vyakhya. The aesthetics of Thuni in theatre. An ardent follower of Bharata, in the 14th century, criticized many of the aberrations of Bharata's instructions. He named it a hook on the actors. A hook on the actors, Natangusha. These are the two original sources in Sanskrit to understand Natyashastra and Kudiyatam, which till now were not available to the public. At this point, a quotation from the late Patriarch K.D. Trivadi ji will help us to understand better the stream of Natyashastra tradition in Kerala. In the preface of his latest edition of Natyashastra, IGNC 2015, he observes, quote,
recent publications of Vingivegia, edited by K.G. Paulus, and an earlier publication edited by K.G. Paulus, offer the aesthetics of Dhwani reflected in the only surviving Sanskrit theatre tradition of Kerala, namely Kudiyattam, and its critique available in the Kerala tradition. These two recently published works are additional valuable sources for understanding the tradition of performance aspects of Sanskrit drama in Kerala. My relentless effort during the last 5 decades were focused on Kudiyattam and the classical art forms of Kerala, like Kathakali, Mohiniyattam, Thullal, etc. This gave me an opportunity to serve the great Kerala Kalamandalam as the first Vice Chancellor when it was elevated to the status of a deemed university. Friends, the greatest blessing in my life is that I always got illustrious preceptors like K.P. Narayana Pisharadi and T.K. Ramachandra to name only 2 to guide me. Our Vedic seers call them trailblazers. Idam nama rishibhya purvadebhya purvebhya padikritbhya. This is Rigveda 10:1. May we bow down before our forefathers and all those sages of ancient times who carved these virtuous paths for us. Pathikrit is a word used by our Veda, Rigveda. Pathikrit, path makers. They make paths for us. We walk through them. My humble pranams for them. Thank you. Thank you. Thank you, Professor K.G. Paulus. Now I call upon Sri Renthilai Lal Ronaji to say a few words. Mr. Chairman, respected President of Sahitya Akademi, other officials and my fellow awardis and friends. Good evening, everybody. First of all, I would like to introduce myself that my name is Renthilai Lalrona, but my friends used to call me Rona, that is a short form. I'm coming from a very far east corner of India, Mizoram, bordering Myanmar and Bangladesh. I stay in the state capital, Aizawl.
Now, I'm very happy today because the Sahitya Akademi has kindly bestowed upon me this prestigious award, Bhasha Samman, which I have never been thinking of as for my own. But it comes true by this evening. For me, today is a very important day and a very special, which I would ever remember because I have never been awarded such a highly esteemed award before. Over and above, I am exceedingly glad since the Sahitya Akademi considered me my humble contribution towards the enrichment, promotion, and preservation of Mizo language, which is not included in this schedule. Regarding my literary works, I would like to mention that I wrote 14 small books pertaining to reading materials for neoliterates, literature, historical fictions, social works, general knowledge, biography, health education, and among these, one fiction called Konglungrun is prescribed for rapid readings in high school course. In addition to this, I have some translation works, 16 in numbers, from English to Mizo. Some are on religious fictions, some are Shakespeare's play, namely Julius Caesar, Macbeth, and The Merchants of Venice. And Macbeth has been prescribed for text piece in college language course under Mizoram University. Besides this, I wrote more than 40 remarkable essays and articles. Some essays have been included in high school textbooks, and I also participated in live discussions on reading and writing of books in Doordarshan and local Akashvani programs, and in various seminars and symposia. It is a great privilege for me to say that I was one of the 6 members founder of popular literary association called Mizo Writers Association, which is going to celebrate its Golden Jubilee next year, that is 2025. And fortunately, I am the only living founder member of that esteemed association. Lastly, but not the least, I was the first editor and founder of literacy as well as literary monthly journal called Meisher, which means a torch or light for the people, copies of which were distributed free of cost all over Mizoram and important centers within and outside India too.
During my short stay with you, I find your amicable hospitality and the kindness extended to me, which I would never forget. Long live the Sahitya Akademi. I wish you all the best for the years to come. Thanking you once again. Thank you. Thank you, Mr. Brahmaji. Now I call upon Mr. Rojama Chongtu. Namaskar. Mr. Chairman, respected President of Sahitya Akademi, other officials, my fellow awardees and friends. I am very happy today for I am included to be one of the awardees of this Bhasha Samman. Let me introduce myself. My name is Rosa Machongthu, living in Aizawl, Mizoram, that is far away from Delhi. Now my age is 72, and yet till I play table tennis. Therefore, I am not 72 years old. I am 72 years young. Okay? Though I have been striving for the enrichment and preservation of my language, that is Mizo language, I have never dreamed of this Bhasha Samman award, because I thought there would be many other writers, scholars, and workers who deserve this award better than I. I belittle myself to be honored with this award. Though my humble works are acknowledged by the Sahitya Akademi, on that I am very glad. Let me summarize a little works of my literacy. I have written 15 books. Sometimes I say 16 books because one of them was published in cyclo style. Therefore, it is sometimes 15 and sometimes 16. And I wrote 3 books in English. And I also translated 3 books from English to Mizo. And I wrote 10 plays which have been staged by different drama clubs. Some of them were broadcast on All India Radio, and some of them were telecast over a television. And I have also recorded talks on language more than 100 times at the Aizawl station of All India Radio. I presented seminar papers about 80 times to different programs. And I composed 45 songs and translated about 30 songs and poems, especially from English to Mizo. That's all. It's a very little work. It's a very little contribution, and I am not proud of them. They are very little in comparison with others' contribution. Since long back, I have been praying to God for I may live long. At least 90 years. My wife asked me why I wanted to live long. Here is my wife. I would like to request my wife to stand up. Oh, please be sit down. My wife asked me why I wanted to live long. My answer was this: if I die soon, after my death, the new generation will defile the beautiful language of Mizo. Therefore, I want to live long to guard my language. So, again, my wife said, the reason why you want to live long is not for the sake of your family. Then I said, no, it's for the sake of language.
Since I retired from my job, the preservation and enrichment of Mizo language is my main work, my work number one. That is my main work. Number two is to teach the people of Mizo the correct usage of English. I therefore have written 3 books on English learning. Again, I am sorry. On the other hand, I am so sorry for I can't speak well in Hindi. My knowledge of Hindi is just for shopping. To end up my speech, I would like to invite all writers, all scholars and workers to try together in one accord so that we may enrich, preserve our main language, Hindi, the main language of our country, and all other languages of India. Again, today I am glad to Sahitya Akademi for awarding me this prestigious award. Let the Sahitya Akademi bloom and flourish forever. Dhanyavad. Thank you, Mr. Rojama. So now we have come to the end of this program. I thank President Sahitya Akademi, Sri Madhav Kaushik ji, and also all the award winners, Professor Purushottam Agrawal ji, Professor Bedwal Ram Brahman Garu, Professor Avtar Singh ji, Professor K.G. Bowlers ji, and Mr. Renthale Ronaji, and Mr. Rojama Chomtu ji, and their proud family members who are present here, and also all the literary community of the Delhi and NCR who made this event a grand success. And also thanks to Professor Kapil Kapoor ji, who is our Honorable General Council member present here, and also many other one of our General Council members are present here. Thank you so much, and I request all of you to join at a tea which is waiting for you at outside. Thank you. And awardees, we will have a group photo.